So in the last class, we have discussed about the Coulomb's law and vector forms of Coulomb's law. So we discussed that if there are two individual charges present in a one dimension, then with the help of Coulomb's law, how to find the force between them. And if the two charges are in air, or that is in three dimension, then how to use the Coulomb's law in a vectorically and to find the force on this one. Now question arises that if a space containing more than two charges, then whether Coulomb's law will be applicable? If yes, then how? To solve this question, we have to use a new principle that is said to be a superposition principle. Clear? So what actually superposition principle says and how to utilize a superposition principle? First of all, you see, I have taken this charge Q1. On this Q1 charge, there are three individual charges present on the space, that is Q2, Q3 and other charges also present, but I am not taking their charge, I have taken the Qn number of charges. This all are applying the force on this one. Then what is the net force applied on this particular charge? So superposition principle suggests us that whenever you want to find the net force on this particular charge, first you have to make certain assumption. Number one, that the charge which you are going to consider, where you have to find out the force, you consider this charge is floating. This is floating in the air. And all the other charges which is applying the force on this are fixed. This one, this one, this one are fixed. Clear? And they are not applying the force on individual charges. Clear? These are the basic assumptions of the superposition principle. What is superposition principle? That whenever you want to find the vector sum, whenever you want to find out the force on these particular charges, so simply what to do, the add the individual forces of all the charges vectorically. So now you see how to find out the force on this one. So I am writing here net force. Suppose this charge is applying the force in this one. Since it is floating, so it may go this side. For time being, don't assume that these charges are present. Just assume this one, that this is only present, this is only present, and this is fixed. If this is fixed, this will apply the repulsive force. I am considering all are the positive. For time being, you can consider negative also. Okay. So this is applying the force on this one. So this force is nothing but the F12. Force on 1 due to 2. Similar, this will also apply the force this way. So this force is nothing but the F13. Clear? This is also applying the force. So this is the n number of force out there. I am writing here F1 and I am using the vector sign. Clear? Now, since in this case I have considered this all are fixed and they are not applying the force on the individual charges, they are applying the force on this one only. Okay. So I am ignoring this part. The principle superposition says that only you concern the forces on which is applying. Now, what is F12? Simple Coulomb's law. Just you consider this and this. This is a K, Q1, Q2 by R. So, what is the distance from here to here? I am considering R12, R12, and this is a magnitude part, and I am taking the square of that. And direction of this force will be this side. So, it is applying on 1 from 2. So, it is a unit vector is like this. I am writing unit vector. Clear? Plus, if I consider this one, then K, Q1, Q1 is common and this is a Q3. This will be R13 and R square. This will be R13. Similarly, if you go for the n number of charges, keeps on adding, this is K, Q1, Qn, R1n is square
and unit vector is like this. Clear? Now, in these cases, what are the things are common? KQ1 is common. I am taking KQ1 outside. So KQ1 is outside. What is remain inside? Q2, R12 like this. R12 vector square plus Q3, R13, R13 like that. For n number of charges, Qn, R1n, R1n like this we can apply. Now, can you able to write this whole thing in a single equation? Yes, it is very easy. So simply I will write here K Q1 is the common. I will put a symbol of summation. Okay, I equal to, now what is remaining here? Q R square. So you see, in this case 1 is common. So I am writing here 1. Here also 1. Here it is 2. Here it is 3. Here it is 4. Like this is going on. So I am writing here this one as a I. This one as a I. This one as a I. This is a unit vector. So I is from 2 to how many numbers? N numbers. So this is the net force. This is the expression of net force applied by all the charges on this one. Clear? So simply superposition principle says that, so whenever you want to find out the force on any one charges by the other charges, then this charge whom you are considering the forces applying, you consider that this is floating, ये हवा में है, और बाकी जितने भी चार्जेस है इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन आल्सो. बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं. नाउ Q1, Q2, Q3 having a charge 2 microcoulomb are placed at the vertices of equilateral triangle. मतलब Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस है और इनको इक्वल ट्रायंगल में रखा हूं. I have to find what is net force on Q3 by Q1, Q2. मतलब इन दोनों ने मिलके यहाँ फोर्स कितना अप्लाई करेगा, तो हमें फोर्स यहाँ निकालना है. This means I have to use the superposition principle. तो हमें इसको फ्लोट करना पड़ेगा और ये दोनों फिक्स हो गए. तो फॉर अ टाइम बिंग जैसा दिख रहा है यहाँ पे कि तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और सबका वैल्यू सेम. इसको कुछ देर के लिए बंद करते हैं. तो मान लीजिए ए फिक्स है, फ्लोट कर रहा है, इसको फोर्स इधर अप्लाई करेगा, तो ए फोर्स अप्लाई करेगा दिस साइड. तो फोर्स अप्लाइड ऑन 3/1. ठीक है. सिमिलरली ये इसको फोर्स अप्लाई करेगा. फोर्स अप्लाइड ऑन 3/2. मतलब एक ही चार्ज पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. बेचारा जाए तो कहां जाए? यस, ये यहां पे जाएगा. दिस इज द नेट फोर्स. ठीक. अब जरा ध्यान से देखिए कि इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा. सिंस इट इज इक्वल ट्रायंगल, तो ऑल आर 60. दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज आल्सो 60. ऑब्वियसली दिस इज वर्टिकल अपोजिट साइड, दिस इज आल्सो 60. तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स बन जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60 डिग्री मीन्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. क्लियर? अब यहां पे हमें निकालना है कि F1 क्या है और F2 क्या है. सॉरी, यहां पे F31
इसको मैंने फिलहाल अपनी सुविधा के लिए F1 मान लिया और अपने सुविधा के लिए इसको F2 मान लिया, तो समझने में इजी होता है, इसलिए मैंने, अदरवाइज यू कैन टेक दिस वन आल्सो, नो इशू। तो हमें F1 F2 निकालना है। सो नाउ F1 3 जिसको मैंने F2 माना है, ठीक है, ये है कितना। सो दिस इज नथिंग बट द, हमने मैग्नीट्यूड निकालना, हमें मैग्नीट्यूड पार्ट निकालना हमें। सो अप्लाई द कूलम्स लॉ, दिस इज K Q2 Q3 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है सभी में सेम है, तो फॉर टाइमिंग मैंने इसको L ले लिया, ठीक है। सो दिस इज अ L स्क्वायर, आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली, लेकिन डायरेक्शन किस साइड होगा, इस साइड होगा। सो डायरेक्शन हो गया, इट इज नथिंग बट द, इट इज 3 2, इस साइड डायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं एंड F31 F31, ओके, पहले वाला था 3 2, सॉरी इट इज 3 2। नाउ F31 इट इज नथिंग बट आई एम टेकिंग 1 एज ए मैग्नीट्यूड होगी, दिस इज K Q1, इस पे अप्लाई हो रहा है Q3 Q1 और इनका डिस्टेंस भी क्या हो गया, L ही है, L स्क्वायर। अब एक किधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 में, कहां से, 1 से, दिस इज पोजीशन। अगर इस इक्वेशन को 1 और 2 को अगर ध्यान से देखो, इसका मतलब Q1 Q2 Q3 अल्टीमेटली सब क्या है, Q ही है ना, तो A भी Q हो गया, A भी Q हो गया, A भी Q हो गया। सो दिस मीन्स F32 and F31 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्यों अलग है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसको मैंने मान लिया F, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर मैंने इसे F ले लिए तो F नेट हो जाएगा हमारा, F नेट हो जाएगा कितना, तो F1 F2 इसको, ये दोनों आखिरी इसको माना था, दिस इज F, दिस इज F, दिस ट्वाइस F, सो दिस इज F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F, I can take this F होने से F स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 means it is how much, half, will cancel out, so you will get this one as a 3 F2 square और F√3। अब मुझे निकालना है कि F होगा कितना, मतलब अल्टीमेटली दोनों का वैल्यू होगा कितना, आइदर दिस वन, ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, तो अब मैं उसे निकाल लेता हूँ, देन वी फाइंड आउट दिस वन। सो या F31 लीजिए या F32 लीजिए, या जिसे हम लोगों ने F कंसिडर करा, बाकी सब कुछ क्या है, सेम ही है, तो हम ले सकते हैं इसको K Q Q, ये भी Q Q ऐसा ले सकते हैं, तो Q स्क्वायर एंड डिस्टेंस कितना हो गया, L स्क्वायर। सिंस हमने मैग्नीट्यूड दिया तो हमें ये वेक्टर लेना जरूरत नहीं है इसमें, क्लियर। अब K का वैल्यू कितना होगा, 3 9 इंटू 9 Q स्क्वायर, जरा देखिए वहां पे, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर एंड L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, जिससे हमें 5 इंटू 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सो दिस विल बिकम 5 इंटू 10⁻2 whole square, clear। Now you try to solve it, so it is 9 into 10⁻9 and this is 4 10⁻12, this will become 25 and 10⁻4, अब ये हो जा रहा है कितना, 36 and 25, क्लियर।
अब जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर ये ऊपर चला गया प्लस हो जाएगा, देन 9 प्लस दिस वन 13, 10 हो गया। क्लियर? अब जरा देखिए 25 को जब भी होगा हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100/4 इंटू 10। 25 के साथ ऐसा कर सकते हैं, A4 ऊपर चला जाएगा, A4 ऊपर चला गया, A कैंसिल हो गया। नाउ यू ट्राई टू सॉल्व इट। अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, नाउ इट इज अ 144, सो 10 नीचे है, 14.4 न्यूटन। तो यानी ये हुआ, ये जो फोर्स अगर मैं यहां पुट कर दूं, सो देयरफॉर इसे इरेज करता हूं, देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू 14.4 न्यूटन। अब सिंस ये दोनों फोर्स सेम है तो ए एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ए एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। सो ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ नेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? और अगर दूसरा वैल्यू है तो आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस सिंपल यूज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा, जब भी हमें किसी फोर्स, किसी भी चार्ज में फोर्स निकालना होगा तो सबसे पहले हम बाकी चार्ज को फिक्स करेंगे और इसे फ्लोट करेंगे। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर।